बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल। मैं हूं आपकी टीचर आयशा और हम पढ़ रहे हैं मैथ्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं दैट वी आर डूइंग मैथ्स फॉर 4+ ईयर्स और अब तक हम अपने तमाम नंबर्स सीख चुके हैं अप टिल नंबर 20 और आगे की काउंटिंग अब आप फ्लो में खुद ही करते जाएंगे टिल नंबर 100। तो आज का जो हमारा लेसन है वो बहुत सी चीज़ों का एक कलेक्शन ऑफ लेसन है, क्योंकि आज के लेसन में हमने कलर्स भी देखने हैं। आज के लेसन में हमने ऑड वन आउट, ऑड का मतलब है जब सारी चीज़ें सेम होती हैं लेकिन कोई एक चीज़ मुख्तलिफ होती है, आपने उसको पिक करके साइड पे कर देना है। ऑड वन आउट का नंबर भी देखना है। आज हमने व्हाट कम्स बिफोर, आफ्टर एंड इन बिटवीन भी देखना है और आज के नंबर में हमने काउंटिंग को विद रिस्पेक्ट टू टेंस एंड यूनिट्स के साथ रिलेट करते हुए रिवाइज करना है फर्स्ट 50 तक और फिर 100 तक हमने काउंटिंग लिखनी है। तो हम जल्दी से चलते हैं अपनी बुक की तरफ और इन तमाम चीज़ों को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो ये है हमारे बुक का पेज। फर्स्ट पेज इज सेइंग कलर्स। कलर द पिक्चर अकॉर्डिंग टू द गिवन कलर्स। हमारे पास पहला कलर है रेड, तो हमने रेड कलर करना है इन एक फ्रूट में स्ट्रॉबेरी और एक वेजिटेबल टमेटो। द नेक्स्ट कलर इज येलो। अगेन वी हैव टू फ्रूट्स ओवर हियर, लेमन एंड मैंगो। फिर आपने कलर करना है ब्लू इस हैट को और इस इग्लू को, एंड ग्रीन कलर करेंगे हम ग्रेप्स के बंच में और इस फ्लैग में। देयर इज अ टीचर्स नोट, हेल्प द लर्नर्स रिकॉग्नाइज द एंड नेम बेसिक कलर्स रेड, येलो, ब्लू एंड ग्रीन. Guide them to color each object according to the given color. Help them to complete the related exercises in the activity book. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 बेसिक कलर्स हैं, रेड, येलो, ब्लू एंड ग्रीन। इट मीन्स के तमाम और कलर्स इन्हीं चारों कलर्स को मिक्स करके बनते हैं। तो आपने इन कलर्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है और इन ऑब्जेक्ट्स को कलर करना है। द नेक्स्ट थिंग इज ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब है कि हमारे पास 3 चीज़ें ऐसी हैं जो सेम कैटेगरी को बिलोंग करती हैं लेकिन एक चीज़ ऑड है, मुख्तलिफ है, तो आपने उस चीज़ को सर्कल करना है। लाइक वी हैव लॉलीपॉप, केक एंड आइसक्रीम बट अ लेमन। दीज ऑल थिंग्स आर स्वीट बट लेमन इज सावर, सो इट इज ऑड. You are going to encircle that. We have 3 fruits over here, mango, apple and pear, but this sandwich is odd, so you are going to circle this. We have 3 insects, a grasshopper, an ant and butterfly, but this crocodile is odd. You are going to encircle that. And same goes with the last question. There is a teacher's note. Guide and help the learners to analyze the objects and highlight that one that is different from all others. Create sets of objects that are related by a common theme, including one object that does not belong to the theme. For example, show the pictures of dog, cat and lion and ask the learners which one does not belong to the group of pets. Help the learners to complete the related exercises in the activity book. तो अगला कॉन्सेप्ट जो है जो हमने इसी लेसन में रिवाइज करना है वो है बिफोर, बिटवीन और आफ्टर का कॉन्सेप्ट। बिफोर मीन्स पहले, बिटवीन मीन्स दरमियान में एंड आफ्टर मीन्स बाद में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट कम्स आफ्टर. We have some numbers. What comes after 9? 10. What comes after 14? 15. The next question is what comes before? We have 6 and 14. इनसे पहले क्या numbers हैं? Before 6 we have 5 and before 14 we have 13. The next question is what comes in between? हमारे पास है 8 और 10. इनके दरमियान में कौन सा नंबर आएगा? 8, 9 and 10. We have 15 and 17. In between it is 16. And the last question is what comes before and after? We have number 5. So before number 5 we have 4 and after 5 we have 6. And same goes with the last 2 questions. There is a teacher's note. Explain the concept given on the page. Help the learners to complete the related exercises given in the activity book. तो अगले पेज पे हैं हमारे पास नंबर्स फ्रॉम 21 to 30. आपने count, read and write the numbers from 21 to 30. Then trace and write the numbers. The first number is 2, 10 and 1, 21. 2, 10 and 2, 22. 2 tens and 3, 23. 2 tens and 4, 24.
and up till number 30, which is 3 tens. You are going to trace them and write them 2 times. There is a teacher's note. Help the learners to count, identify and trace the numbers from 21 to 30. Guide them to complete the related exercises in the activity book. On the next page, we are going to do the same thing with the numbers from 31 to 40. Count and read the numbers from 31 to 40. Then trace and write the numbers. 3 tens and 1, 31. 3 tens and 2, 32. 3 tens and 3, 33. And same goes up till number 40, which is 4 tens. Teacher's note. Help the learners to count, identify, trace and write the numbers from 31 to 40. Guide them to complete the related exercises in the activity book. Numbers from 41 to 50. Count and read the numbers from 41 to 50. Then trace and write the numbers. 4 tens and 1, 41. 4 tens and 2, 42. 4 tens and 3, 43. And same goes till the number 50, which is 5 tens. Help the learners to count, identify, trace and write the numbers from 41 to 50. Guide them to complete the related exercises in the activity book. T numbers. You are going to count the tens, write and learn T numbers. T numbers are those numbers, my dear kids, which are tens, like 20, 2 tens, 30, 3 tens, 40, 4 tens, and 50, 5 tens. Trace these numbers and repeat them sometimes. There is a teacher's note. Help and guide the learners to count the tens and trace T numbers in correct number formation. Use visual aids like number cards from 20, 30, 40 and 50. Encourage them to count numbers as groups, emphasizing the T numbers. And the last page with this lesson is numbers from 51 to 100. तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने 0 से 51 की काउंटिंग बहुत डिटेल में की है. अब आपने 51 से 100 तक काउंटिंग करनी है. 51, 52, 53, same goes up till 60, 61, 62, 63 up till 70, 71, 72, 73 up till 80. And same goes till the number 100. Help the learners to count, identify and trace the numbers from 51 to 100. Guide them to complete the related exercises in the activity book. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन and in this lesson we have revised so many things. We have started with some basic colors. फिर हमने रिवाइज किया कॉन्सेप्ट ऑड वन आउट का. फिर हमने यूनिट्स और टेंस से रिलेटेड काउंटिंग की 50 तक और फिर 51 से 100 तक. तो आज का लेसन हमारा बहुत ही स्टफ्ड, बहुत ही कंपोज्ड लेसन था. इन तमाम चीज़ों को आप घर पे लाजमी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो जाएं. तो ये था हमारा आज का लेसन. हम दोबारा मिलेंगे कुछ नए चीज़ों के साथ. टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.